Okay, now you understand beta what is psychosis. That is the loss of contact with reality. Antipsychotic drugs do not cure the pathology, but they can relieve your symptoms, positive symptoms, negative symptoms. And a very good example of the psychosis, chronic psychosis, is the schizophrenia, in which you see symptoms of psychosis like hallucinations, delusions, and the negative symptoms like social withdrawal and all. What is the problem in the schizophrenia? The problem in the schizophrenia is, yeah, imbalance between the imbalance of the dopaminergic neurotransmission between the mesolimbic pathway and the mesocortical pathway. Usually in the mesolimbic pathway the dopaminergic transmission is increased, and in the mesocortical pathway the dopaminergic neurotransmission is increased. And due to pathology in the mesolimbic pathway, the positive symptoms are produced, and due to the pathology in the mesocortical pathway, negative symptoms are produced. Right? Okay. How are you going to treat this? Two category of drugs are there. One are the first generation drugs and one are the second generation drugs. These are the antipsychotic drugs. फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स इनको हम कन्वेंशनल या फिर टिपिकल ड्रग्स भी कहते हैं, और सेकंड जनरेशन ड्रग्स जिनको हम एटिपिकल ड्रग्स भी, मैं बताऊंगा इनको टिपिकल एटिपिकल भी क्यों कहते हैं. देयर इज़ अ वेरी गुड स्टोरी बिहाइंड. बट या फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स and the second generation drugs. First generations are the typical drugs, conventional drugs, old drugs, but the latest one, modern ones, are the atypical second generation drugs. और first generation भी low potency high potency की drugs होती हैं. दो classifications होती हैं बेटा. Okay, what do first generation drugs do? First generation antipsychotics, they are the D2 receptor blockers in the mesolimbic pathway. What do they do? In the mesolimbic pathway, they block the dopamine receptor. So once they block the dopamine receptor, what happens then? What was the problem? Increased dopaminergic neurotransmission. Once you block the dopamine receptor, the increased dopaminergic neurotransmission will be decreased simply. But the problem with the first generation drugs is they are most likely associated with the movement disorder. A very kind of problem with the first generation antipsychotics is a big adverse effect, movement disorder. They produce the extrapyramidal symptoms. कौन से extrapyramidal symptoms वो भी मैं बताता हूँ. Particularly drugs that bind the dopaminergic receptors very tightly, for example haloperidol, and the drugs that bind less potently like the chlorpromazine, they produce less movement disorder. You see what I'm trying to say? For that I have to explain you in a much better way. Just a second. Okay. Yeah. Right, beta. So what did I say? The main problem with the first generation antipsychotic drugs, okay, this is good, they block the dopamine receptor, so the symptoms, they block the dopamine receptor, so the dopaminergic neurotransmission is reduced and the symptoms are relieved. But the important, the very kind of problem with the first generation antipsychotics is the मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसको हम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कहते हैं. ये क्यों होते हैं ये थोड़ा समझाना है मैंने आपको. यहाँ पर अगर आप आओ बेटा, थोड़ा सा यहाँ से मैं समझाऊँ कि वाई एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, वाई EPS. आपको एक बात बताऊँ बेटा मैं कि पीछे मैंने आपको ये समझाया कि आपके मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा मौजूद है. उस सब्सटेंशिया नाइग्रा से एक सर्किट स्टार्ट होता है और जाके ये टर्मिनेट होता है आपके कहाँ पे, लिम्बिक सिस्टम के अंदर जाके ये ख़त्म होता है. ठीक है, ये बताया था मैंने. सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्टार्ट होता है और लिम्बिक सिस्टम में जाके ये मीज़ोलिम्बिक पाथवे चलता है. ठीक है, और फिर आप जब फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स देते हो तो यहाँ पे जो डोपामीन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है, और डोपामीन यहाँ से जो रिलीज़ होता है वो जाके बाइंड नहीं कर पाता और डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन कम हो जाती है. यू गेट रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स. But my friends, the life is not so easy. Here is another circuit. Let me describe. Can you see this is the substantia nigra?
The fibers from the substantia nigra also go towards the what? Basal ganglia. And this another circuit in which the fibers are arising from the substantia nigra and they are terminating at this basal ganglia. This is said to be nigrostriatal pathway. Why nigrostriatal pathway? Because the fibers are arising from the substantia nigra. So nigro, and why striatal? Because the fibers are terminating at the corpus striatum of the basal ganglia. Okay, so this is the substantia nigra, this is the basal ganglia, and this is the nigrostriatal pathway. This is also a dopaminergic pathway. The drugs we provide, first generation antipsychotics, they block the dopamine receptors not only here in the limbic system, but the dopamine receptors which are present here on the basal ganglia as well. So the dopaminergic activity here is also blocked. So when the dopaminergic activity is blocked here, the alternating cholinergic activity is increased. What did I say? The first generation antipsychotics block the dopamine receptor here in the limbic system. So this dopaminergic neurotransmission is reduced here, and the positive symptoms, especially the hallucinations and the delusions, are decreased, and we feel happy. But what is the problem? The first generation antipsychotics block this dopaminergic receptors not only here in the limbic system, but they block also the dopaminergic receptors on the basal ganglia, especially the corpus striatum. So when this dopaminergic neurotransmission is reduced in the basal ganglia, when dopaminergic activity is reduced due to the blockage of the receptor by the first generation antipsychotics, sorry. So when the dopaminergic activity is reduced here due to the blockage by the first generation antipsychotics, the alternating cholinergic activity is increased. And there is normally the balance between the dopaminergic activity and the cholinergic activity in the basal ganglia. When you provide the patients with the first generation antipsychotics, they block the dopaminergic receptors not only the limbic system but also the dopaminergic receptors in the basal ganglia. So when the dopaminergic receptors are blocked, dopaminergic activity is reduced and the alternating cholinergic activity is increased. So due to this dopaminergic activity decreased and increased cholinergic activity in the basal ganglia, movement disorder produced, that is called extrapyramidal symptoms. You understand बेटा? अब इसी चीज़ को ज़रा यहाँ पे देखते हैं. This is the substantia nigra in the midbrain. Substantia nigra in the midbrain, and this is the basal ganglia, especially the corpus striatum. You see the fibers are arising from the substantia nigra in the midbrain, and this pathway is terminating at the basal ganglia, and this is the dopaminergic pathway arising from the substantia nigra. This is the nigrostriatal pathway. Okay, so the first generation antipsychotics will block the dopamine receptors here on the basal ganglia. So what will happen? The dopaminergic activity in the basal ganglia will be decreased and the alternating cholinergic activity will be increased. And due to this increased cholinergic activity and decreased dopaminergic activity, movement disorders are produced, and that is what we call extrapyramidal symptoms. जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक डोपामिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जितना टाइटली बाइंड होती होगी वो उतना ज़्यादा मूवमेंट डिसऑर्डर कराएगी. आप देखो ना, फ़र्ज़ करें कोई फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है जो कि डोपामिन रिसेप्टर को टाइटली ब्लॉक करती है, तो वो यहाँ पे भी टाइटली ब्लॉक करेगी, यहाँ पे भी टाइटली ब्लॉक करेगी. यहाँ पे टाइटली ब्लॉक करने से आपके जो उसके सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वो तो कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी तो टाइटली ब्लॉक करेगी ना. यहाँ पे टाइटली ब्लॉक करने की वजह से डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी और कोलिनर्जिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी. इसकी वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर भी ज़्यादा होगा. अगर एक फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है जो कि ब्लॉक करती है डोपामिन रिसेप्टर को लेस पोटेंटली, लूजली यहाँ पे बाइंड होती है, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, यहाँ पे भी लूजली ब्लॉक करती है, तो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी, तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर भी कम होगा. देखो, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो टाइटली बाइंड करती हैं डोपामिन रिसेप्टर को नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में, तो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, कोलिनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी. और अगर टाइटली बाइंड करती हैं तो ये डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बहुत कम और कोलिनर्जिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मोटर प्रॉब्लम्स जो हैं
मूवमेंट डिसऑर्डर्स वो भी ज़्यादा होंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलोपेरिडोल है, इट्स अ फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। ये ब्लॉक करती है डोपामिन के रिसेप्टर को टाइटली, तो मूवमेंट डिसऑर्डर भी ज़्यादा होगा। और जो क्लोरप्रोमाज़िन है वो बाइंड करती है डोपामिन रिसेप्टर के साथ लेस पोटेंटली, तो मूवमेंट डिसऑर्डर भी कम होगा। सो इनिशियली व्हेन द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स वर launched in the market, everybody knew that these are the drugs which relieve the symptoms of the schizophrenia, relieve the positive symptoms, relieve the negative symptoms, but they produce the extrapyramidal symptoms. And later we came up with very new antipsychotic drugs that relieved the symptoms of schizophrenia, but they did not produce any extrapyramidal symptoms, so they were really good. At very first, what sort of drugs were launched? First generation antipsychotics were launched, and every first generation antipsychotics which was launched, it relieved the symptoms of schizophrenia, but the problem with every drug was extrapyramidal symptom. तो हमने कहा कोई भी आप ड्रग दें एंटीसाइकोटिक जो सिम्टम्स को रिलीव करे और वो लाजमी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम करा रही है, तो इसको टिपिकल का नाम दे दो, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। बाद में चल के सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स आई, वो सिम्टम्स को तो रिलीव कर रही थी, लेकिन दे वर रियली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। हाउ डिफरेंट? कि सेकंड जनरेशन ड्रग्स जो थी बेटा वो सिम्टम्स को तो रिलीव कर रही थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स नहीं करा रही थी, वो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स नहीं करा रही थी। सो वी सेड दे आर वेरी मच एटिपिकल, वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। दे आर रिलीविंग द सिम्टम्स बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द साइड इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। तो इस वजह से उसको हमने एटिपिकल ड्रग्स कहना शुरू कर दिया। हाउएवर एटिपिकल ड्रग्स आर वेरी गुड, but why do we call them atypical? Because they were very different from the first generation. How different? First generation drugs relieved the symptoms but produced the extrapyramidal symptoms. Second generation's antipsychotics, they relieve the symptoms but they do not produce the extrapyramidal symptoms. So now let's talk about a little about the second generation drugs.